It's live. All right. Assalamu alaikum, everybody. Uh, Walaikum. this is this is our new Walaikum assalam. discussion. This is Walaikum our assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. All right. So this is our discussion on youth matters, right? And the topic of today's discussion would be secularism. Joining with me is brother Ibrahim Faruqi, right, and brother Farid Ahmad, right. So let's start with it, right. So without further ado, let's discuss certain points, right? Starting the primary question we would suggest in terms of talking about this topic of secularism would be the definition of secularism, right? What are the official definitions of secularism, and what is known by here in Pakistan, in context of Pakistan, in context of the youth? What do they think? What do they have in mind whenever this word secularism is used? Is it Right, positive? Is it negative? What it is? The official definition right. would be So, as a start. So yeah, yes, brother Ibrahim. yeah. So secularism is the idea, is the philosophy and the ideology that states that government and religion should be two separate things, and they should not interfere with each other. And secularists would say they should not meddle with each other, and they should be separate bodies, right? And this is the thing that is being espoused by those Pakistanis who are trying to forward this secular initiative. They want a complete separation of religion and state. They want that that religion, specifically Islam, should not have any influence on the constitution, on the laws, and on the way the country is run. And if we see, or if we go a Just bit into okay, just a second, the Ibrahim. history of Ibrahim, secularism, we see that this is how it started. It started with the overthrow of the Catholic Church in Europe and the Enlightenment period, which in the West they call it the Enlightenment period because they were following a false religion, which is Catholicism, and they All right. adopted So Judaism, and the they were follow up question, right? So the follow up question. So in definition, you said that the secularism basically means the separation of the constitution, a law, and religion, right? state and So religion. it could, yes, state and religion. So it could be understood in the way that it's just about the constitutional and political systems, right? And not just separation of anything else, right? So what's the big issue with that, right? Is secularism, is it limited uh, to? okay, okay. Can you hear me, both of Yes, you? we can hear Yes. you. Okay. Okay. Let's keep it in Urdu because we have a lot of audience today who won't be very much comfortable in English. Okay. So I ठीक request है both of you to keep in Urdu, right? तो Or हम ये कह bilingual. ठीक है हम ये कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म है ये आइडिया कि जो गवर्नमेंट है और दीन और गवर्नमेंट मजहब और गवर्नमेंट ये अलग होनी चाहिए दीन का कोई तदाखुल नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस और तदाखुल नहीं होनी चाहिए दीन के मामलात में ठीक है दे वो ये कहते हैं इन थ्योरी कि गवर्नमेंट को बस जो दीनदार लोग हैं और जो दीनदार तबका है और जो दीनी सोच है उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और दीन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पे और पॉलिटिक्स पे एंड हाउ अ कंट्री इज रन बेसिकली ठीक। अच्छा, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी, ठीक है। लेकिन बात ये है, अगला सवाल जो इस पे आता है कि इसमें मसला क्या है, राइट? हमने देखा है कि यहाँ पर दीनी अफेयर्स जो काफ़ी ज़्यादा जब पॉलिटिकल सिस्टम में आते हैं, इवन पाकिस्तान में, तो हमने देखा है कि यहाँ पर लोग एतराज़ उठाते हैं कि कत्ल गारत और ये वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कुछ मसाइल आते हैं, वो कहते हैं कि दीन जो है वो काफ़ी प्रैग्मेटिक नहीं है, वो काफ़ी आइडियलिस्टिक है। तो हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा मोर प्रैग्मेटिक सिस्टम चाहिए जो कि हमारे सॉल्यूशंस का हल निकाल के दे। तो यहाँ पर काफ़ी आइडियलिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रैग्मेटिक्स को इग्नोर किया जाता है। प्रैग्मेटिक का अच्छा मतलब यानी प्रैक्टिकल। आप जो पहला सवाल आपका जो पहला पार्ट है कि प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एज आवर रिलीजन इन द ट्रू रिलीजन इस्लाम की एक अपनी
पॉलिटिकल थॉट है, अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो कि कहती है कि दीन का गवर्नमेंट बेस्ड ही दीन पे होनी चाहिए। जो दीन के उसूल हैं उनकी बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, उनकी बेसिस पे ही कंट्री को रन करना है। और सेक्युलरिज्म इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है, ठीक है। दैट्स व्हाई अ मुस्लिम बाय नेचर हैज टू बी एंटी सेक्युलर। एक मुस्लिम, एक मुसलमान जो कि दीन को समझता है, वो सेक्युलरिज्म के हक में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम क्लियरली कहता है कि इस्लाम की अपनी पॉलिटिकल थॉट है। और इस्लाम कहता है, कुरान में मौजूद है, सुन्नत में मौजूद है क्लियरली कि गवर्नमेंट दीन पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। But most people they don't understand this point, and this is very important to understand. That's the first problem. The second problem is Okay, I think Hamas, okay, what I think is, what I've understood from your conversation is that secularism ये कहता है कि दीन को स्टेट के किसी भी मैटर में नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल जी दिस पॉइंट नंबर वन। जी और सेकंड ये कहता है कि आप जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो एथिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, वो सारे इक्वल हैं। जी जिसका ये मतलब हो सकता है कि अगर एक सेकुलर सोसाइटी है, उसमें एक एग्नोस्टिक या एथिस्ट भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है ऑलराइट। जी तो in a secular society. Okay. अब जी इसमें Okay. एक काउंटर क्वेश्चन। And हाँ जी। this is what secularism means. Or secondly, secularism is about the freedom of expression. Let's define secularism. यस। Secularism is about फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एंड सेकेंडली एक्सप्रेशन। वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या आपकी डेमोक्रेसी जो जो भी रूल पास कर दे वो लीगल हो जाए। या it's part of secularism. For instance, if our constitution allows that drug addiction is legal, so it should be legal. If the constitution allows that, you can marry your own mother, and then in a secular state you can marry your own mother. If the constitution says that you can marry an animal, so in a secular state, you can marry an animal, right? yeah There should be no problem. So yeah this is what secularism is. In a secular state, if the government says you can marry an animal, you have to marry. You can marry a dog. You can marry a cat. You can marry an elephant. okay so As long as those it is legal. Alright. So now the counter some question people I want to okay say some is that people might count okay so freedom of expression and freedom of speech, that's one part of liberal secularism, okay, liberal with a capital L, okay. Okay. Now and someone can say that okay, we don't do this stuff, we follow our own cultural norms, but the answer to that is, how do you regulate your cultural norms? How do you decide what is right and what is wrong? And that takes us to a further philosophical dilemma, which is the question of morality. And this is where religion becomes very important. And that's what I was going to say. I was going to say secularism is a theory, okay? And people have tried to apply it, but it is not something that can be purely applied. Why? Because even in the secular countries that we see today, they still interfere with religious matters. They still do that. And they still forbid things that religions allow. So, for example, Islam clearly states that a woman has to wear a hijab and a niqab, right? But France, for example, which is a secular country, has banned the niqab based on its secular values, based on its secular values that it itself has deduced. All right, and its cultural norms dictate whatever they dictate, and so they've imposed that upon religious people. So they are interfering with religion, and there is no freedom of religion technically speaking. So it's a theoretical idea that cannot fully be established in honesty. Yeah. Alright. चलो, तो हमारा इससे अगला जो सवाल निकलता है वो दो चीज़ों का। एक तो ये है कि क्या पाकिस्तान में इसका कोई मसला है, नंबर वन, कि क्या पाकिस्तान में इस चीज़ को इशू बनाना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरू से ही कहता है कि ऑल सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, राइट। कोई भी लॉ जो है जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा वो पास नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन पेपर टेक्निकली हमारे यहाँ तो ये मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये मसला है।
आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या ये बात दुरुस्त है कि इसमें जैसे कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो उसमें ये हमारा जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सारी सॉवरेनिटी और लॉज को इसमें करता है कि वो कॉन्ट्रडिक्ट ना करें कुरान और सुन्ना से, तो क्या ये बात दुरुस्त है? हमें तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सेक्युलरिज्म की। इसके बारे में आपकी क्या राय है? Right? Do you want me? Okay, I would like to, तो Ibrahim, I would like to, सबसे पहले मैं okay, फरीद भाई की तरफ ये सवाल करता हूँ, आप okay, पहले जवाब दीजिए। okay. So as per my understanding, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहे हैं कि देयर इज डेमोक्रेसी, but that democracy cannot go outside the rim of Islam. Okay, so Alhamdulillah, the Constitution of Pakistan says that the National Assembly cannot pass a bill which is against the tenets of Islam. इसका यस, क्या मतलब है कि नेशनल असेंबली कोई ऐसा बिल नहीं पेश कर सकती जिससे सिंगल जेंडर की शादियां हो जाए, वो गेज और लेस्बियनिज्म नहीं प्रमोट कर सकती, वो ऑब्लिगेटरी नहीं कर सकती कि हर सिटीजन को अल्कोहल पीनी चाहिए, या वो कोई ऐसा बिल नहीं पास कर सकती जो इस्लामिक टेनेट से बाहर जाए. बिल्कुल। ओके, सो दिस इज समथिंग रियली वेरी गुड, and I give credit to Pakistan Army, because it is Pakistan Army who have kept this motto of Islamic State in Pakistan, and we should give credit to the army in my understanding, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा सेकुलर themselves हैं, but तो अब the main archer of this is okay. Point number two is that अगर पाकिस्तान का विजन सेकुलर स्टेट ही होता तो there was no need for Pakistan in India. India was already a secular state, and at the time of partition, the people from Muslim League, the name itself is Muslim League, they they made Pakistan. Now there are Western authors who say that there was a personal agenda of these people, but on the face head, okay, जो हमें सुनने को मिला कि पाकिस्तान is named under for the Islamic State. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कुछ सेकुलर भाइयों को कि वो कहते हैं कि कायदे आजम himself was very liberal, जी, और यही secondly मेरा वो अगला कायदे सवाल था ना आजम कि की जो speech स्पीच है out of context quote करते हैं that you are free to go to your चर्चेज एंड मॉस्क, churches, you are free to, okay, okay, उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि इसमें मसला इन वर्ड्स को पहली आप बात ये है देखो, कि इस वर्ड्स तो में ये इस्लाम के साथ किसी भी जगह पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान में फरमाया लकुम दीन, ओके, जी जी, इस वर्ड्स में कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं लगा. ओके, इट इज अबाउट द विजन ऑफ द रीडर कि वो किस तरह उसको टिल्ट करना चाह रहा है, बिल्कुल। it's about how the person is going to tilt him. So this is a very strong argument that is also is an Islamic state. Okay, so here is how Pakistan's democracy is different from the rest of the democracy of the Western countries. Uh, that our constitution cannot go against Quran and Sunnah. Ibrahim, if you would like to add something on it. यस Yeah, प्लीज। so what I want to say was, I think the debate is not so much about whether Pakistan is a secular country or not. Yeah, I I think even our opposition would agree that Pakistan has a lot of Islamic influence on it, even if they disagree that the foundations of Pakistan were based on Islam. All right, and I also think it's not really important what the initial vision was. What is important is to know that it was a country that was built with the vision to provide a safe haven for Muslims. Okay, and the essential elements of it were always Islamic and have been in essence Islamic, like from the get-go. Like you mentioned, the Constitution says that nothing, no bill will be passed forward if unless it is in accordance with the Quran and the Sunnah. What is important to discuss though is the movement that is rising within our right country. now. Yes, right Yeah, now, well, from its proponents is Pervez Hoodboy and others, right, who are forwarding this narrative of promoting secularism.
in the country. In essence, what they want is they want to change the initial constitution, right, for it to be completely based on liberal secularism. And this is the problem that we need to deal with. And the evidence that they like to quote is the success of the West after the Treaty of Westphalia and after the fall of the Roman Catholic Church. Now, the problem with you with doing Okay, Ibrahim. One request is to keep in Urdu. आप उर्दू में रखें, okay? मुझे पता है naturally we go to English. it's fine. Secondly, हमें audience को ये बताना चाहिए कि basically इसका context क्या था. जी, मैं As per my understanding and my research, हम हमारे दरमियान में कुछ प्रोफेसर्स भी हैं जिन्होंने आंसर दिया हुआ है that why should we become secular, और उसका क्रक्स ऑफ द मैटर ये कि उन्होंने कहा है कि यूरोप के सेकुलर होने से पहले तकरीबन 178 ईयर्स तक वो एक रिलीजियस वॉर थी आपस में. सो दे वर फाइटिंग विद वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. फिर 1522 से 1700 तक एक रिफॉर्मेशन आई और उन्होंने काउंटर रिफॉर्मेशन कॉज की जिसकी वजह से 17 मिलियन डेथ्स हो गए. ओके, तो अब ये क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी तो फिर ये जो ट्रीटी का नाम ले रहे हैं, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन 1648, और उस ट्रीटी में बेसिकली था कि ऑल रिलीजन्स कैन गो विद वन अनदर, दे आर ऑल बेसिकली इक्वल. एंड सेकेंडली जितनी भी कंट्रीज थी वो एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर ना करें. ओके, और उसके बाद यूरोप ने अराउंड फॉर 200 इयर्स काफी ज्यादा प्रोस्पेरिटी की. लेकिन अब यहाँ पर एंड हो जाता है और वो फिर कहते हैं कि इसलिए पाकिस्तान को सेकुलर होना चाहिए. अभी इन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने इम्प्लाई किया बस. क्या ये डॉक्टर तैमूर की वीडियो की हम बात कर रहे हैं? जी. अच्छा, ओके. तो अब डॉक्टर अगला ये तैमूर, सवाल इसके अलावा भी में अवाम का सवाल रहता है कि देखें हमने देखा है कि इस वक्त कंट्रीज जो हैं ऑल ओवर द नहीं, मेरा ख्याल है इस पॉइंट को एंड करना चाहिए. तो यहाँ पे वो वीडियो एंड हो जाती है. लेकिन अगर आप ये देखें कि ये सारे कंट्रीज सेकुलर थे और डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ देयर सेकुलरिज्म वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई. ठीक है, अब वो कोई मदरसे के बच्चों के दरमियान में नहीं हुई कि जिन्होंने जिहाद की बुक पढ़ी हुई थी. ये सारी वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं सेकुलर लोगों के दरमियान में. ठीक है, एट द सेम टाइम हमें ये देखना चाहिए कि जो हिटलर था, he was not a religious person. Was he a religious person? You can't claim him to be a religious person. उसके कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उसने जो है ना क्रिश्चियनिटी को अपना एक सोर्स बनाया था. लेकिन वो आप डेफिनेटिव नहीं कह सकते क्योंकि उसकी प्राइमरी आइडियोलॉजी जो थी वो रेशियल थी और एज अपोज टू रिलीजियस. और उसकी वो आपको आउट ऑफ वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एज अ स्केप गोड लिया था लेकिन नॉट एज अ प्राइमरी आर्ग्यूमेंट. राइट, उनके जो प्राइमरी सिस्टम थे प्रोपेगेंडा के वो थे जो हिमलर ने बनाए थे, और वो प्राइमरीली उसका जो लिंकेज था वो था superiority of race and what not, Nordic race, right, उस एरिया की. तो ये उनकी primary driving तो basically if we leave this example of Hitler, if we just stick to the world wars, they were fought between the secular states who progressed because of this secularism. Okay. Yeah, Ibrahim, if you would like to add something. I want to mention was आप अगर हिटलर वगैरह को ना भी देखें, आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अलावा भी सोवियत यूनियन के अंदर जो जुल्म हुआ था कम्युनिज्म की वजह से, जो कि प्योरली एथियस्टिक है. ठीक है, कम्युनिज्म का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है. इनफैक्ट दे आर एंटी रिलीजन, वो दीन के मुकम्मल अध्ययन के खिलाफ हैं, एथियस्ट हैं. और सोवियत यूनियन की तरफ से जो जुल्म हुआ और जो कॉलोनियलिज्म इन सेकुलर कंट्रीज की तरफ से फॉरवर्ड हुआ, जो अफ्रीका में मुसोलिनी की तरफ से और पोर्चुगल और डिफरेंट कंट्रीज ने कॉलोनाइज की मुख्तलिफ ममालिक को, अपना पाकिस्तान ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया, and so on and so forth. All of this tyranny was happening. ये सारा जुल्म होता रहा under the banner of secularism. All right.
So this goes to show that secularism is not the solution. And even now, secularism, I would say, at a cultural level and at a societal level, has only increased the dilemma of humanity. Right after the imposition of secularism, and the practice of secularism throughout Europe, you look at the amount of moral based questions that have risen, morality के लिहाज से, the legalization of homosexuality, for example, is an example of it. अब किस तरह की खुराफात वहाँ फैलाई जा रही हैं, हर तरह की स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं ये खुराफात और ये फवाहिश, ठीक है। तो इस पूरी जो सोसाइटी का सिस्टम है वो इस सेक्युलर बेस ने तबाह बर्बाद कर दिया, फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। अब कोई बंदा यानी अल्लाह माफ करे, इस तरह की न्यूज़ में कहानी आती है, किसी ने अपनी माँ से, किसी लड़की ने अपने बाप से, बोले इयादु बिल्लाह, यानी शादियों की, इस तरह की, अल्लाह बचा के रखे सबको इन खुराफात से। लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वहाँ और लोग एतराज़ भी नहीं करते, ठीक है। Transgenderism and so on and so forth. The existence of 72 genders, people trying to promote कि भाई मर्द और औरत कोई चीज नहीं है, but 72 genders, and all of this is a result of secularism. Besides about barbari as a result of secularism, yeah. हाँ जी, अब इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि देखें जो कि रिलीजियस परसिक्यूशन के अलावा जो कि कम्युनिज्म में हुआ है, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं कि ये बहुत एक्टिव परसिक्यूशन है, नॉट सिर्फ इन रशियन हिस्ट्री बट इस वक्त करंटली चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट persecutors today, right? And they're still persecuting Muslim populations and even Christians population within China. ठीक है, तो एथीज़म और सेक्युलरिज्म के जो इफेक्ट्स ऑफ डेडली इफेक्ट्स हैं वो अभी तक जारी हैं। उसके अलावा एक एडिशनली जो स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम देखें कि हिस्ट्री के अंदर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ये बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि all wars was caused by religion, right? Yeah. This is a very false statement, right? आप अभी भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ वॉर्स बाय डेथ टोल, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बाय डेथ टोल, ठीक है ना, मेजॉरिटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उसमें वो रिलीजियस बेसिस पे नहीं हुए, ठीक है। मेजॉरिटी जो इतनी भी टॉप लिस्ट ऑफ क्या कहते हैं डेथ्स और वॉरफेयर्स हैं उसमें रिलीजन उनका प्राइमरी कॉज नहीं था, ठीक है ना। कुछ में Even majority of suicide attacks या terrorist attacks भी religious cause की वजह से नहीं हुए. No. They were more because yes. of ethnic backgrounds, different supremacies. Racism, white supremacy, many causes. There's also the frustration with government and so on and so forth. That the terrorist organizations rising. So religion has not been, at least from in our Islamic world, okay, religion has never been a source of backwardness or wars or terrorism. In fact, during the Islamic Golden Age, and this point is reiterated, and we need to continue reiterating it till people understand it, because it's a fact. During the Islamic Golden Age, when Islam spread from Arabia all the way to China, right? Under the rule of Islam, there was prosperity, there was enlightenment, there was technological advancement, scientific Yeah, advancement, एक and एक everything. एक ये डॉक्टर तैमूर के वीडियो में यही एक he turned a blind eye towards it कि where you are comparing the progress of Europe, आपको इस्लाम की progress क्यों नहीं नजर आती in the medieval ages, right, which was the golden age, जहाँ पे printing, surgery, and the Muslim contributions. So that example, in contrast to the example of Europe, you can't compare both of them because that was a very dynamic and a very fast change in comparison to Europe. So we Muslims also have this argument to bring forward कि अगर आपको ये नजर आते हैं, सेकेंडली मैं आपको ये बताता हूँ कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान को सेकुलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि सेकुलरिज्म की वजह से मटेरियल प्रोग्रेस आएगी। एक ये बहुत बड़ा इनका मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप देखें हिस्ट्री में, the
पोलैंड ज्यादा सेक्युलर था यूके से, लेकिन यूके पोलैंड is a poor country and UK was a rich country. Okay, so there is no contrast between secularism and being economically good. Okay, यहाँ पे कोई contrast नहीं है. So I think we have spent 25 minutes in explaining how is how are some people trying to bring secularism in यस Pakistan. So Hamas, what do you think? What are some of the reasons? Ibrahim, we can't see your video. ऑलराइट. तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि जो पाकिस्तान वाली सेक्युलरिज्म है ना, आप एसेंशली ये बात अपने जहन में रखें कि जो सारी चीज़ है इसकी इंस्पिरेशन आती वहीं से है. ठीक है, वेस्टर्न एकेडेमिया से, वेस्टर्न मीडिया से, वेस्टर्न सिस्टम से. ठीक है, अब आती तो वहाँ से है, लेकिन पाकिस्तान में ये किस तरह ट्रांसलेट होती है. पाकिस्तान के अंदर जो इसकी ट्रांसलेशन है वो एक ही काफ़ी बड़े मखसूस तरीके से होती है, और वो हर उस मीडिया इवेंट पे कैपिटलाइज करेगी जहाँ पर रिलीजियस पीपल जो हैं उनसे कोई मिस्टेक होती है, या कोई रिलीजियस लॉज की वजह से कोई भी जो है मतलब चीज़ होगी, उस कोई भी मसला आएगा उस चीज़ पे वो कैपिटलाइज करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म. ठीक है, और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, यहाँ मतलब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नहीं हुआ बल्कि हर जगह पर. ठीक है, जहाँ पर सेक्युलरिज्म फैलाया गया है वहाँ पर मीडिया की प्राइमरी स्ट्रेटजीज यही रही हैं. ठीक है, और आपके जो अपने लोकल्स हैं ना, दे आर बेस्ट सूटेड टू स्प्रेड सेक्युलरिज्म. आपको किसी स्पेसिफिक एजेंट्स या वेस्टर्न आप कह लो कि स्पाइज वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर आप आइडियोलॉजिकली ऑलरेडी इंक्लाइंड हो जाते हैं किसी एक्सटर्नल आइडियोलॉजी के साथ, ठीक है ना, आप ऑटोमेटिकली उसके एजेंट बन जाएंगे. एजेंट मीन्स वो पर्सन जो कि आप वो आइडिया प्रपोर्ट करेंगे. ठीक है, उस सोसाइटी में. तो ट्रिकी बिजनेस इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ये सारे मटेरियलिस्टिक बेसिस के ऊपर वो भी स्टैट्स लेके आते हैं. वो कहते हैं कि देखिए मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ हैं जिसमें रिलीजन जो है पॉपुलर है और रिलीजन जो है वो प्रिवेल करता है. ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हैं, उनकी वेल्थ बहुत अच्छी है, उनके सारी चीज़ें उनकी अच्छी हैं. ठीक है, वो सफाई का ज़्यादा ख्याल रखते हैं. आपकी जितनी भी जो आप हमें बताते हैं दीन से कि जी सफाई के मामले में, ईमानियत के मामले में, लोगों से अच्छे सलूक के मामले में, वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों में वो जो सेक्युलर कंट्रीज़ हैं वो बहुत आगे हैं, वो अच्छी हैं और ये हैं, और उनके पास प्रोग्रेस है और सारा कुछ है. ठीक है ना, And that's not ये true. उनका That's not ये really true. Yeah. I mean, but this anyone is the narrative that they bring, right? So this is the like anyone narrative they who's been bring. to the Middle East, for example, we've been to Saudi, the UAE, Kuwait, and these Mm-hmm. countries, their kingdoms, most of their constitution is Islamic, right? Mm-hmm. And they promote Islamic values. And alhamdulillah, these countries are clean. There's no terrorism. In fact, the crime rates are lower. The crime Mm-hmm. rates are lower than the crime rates in Europe, right? Mm-hmm. Yes, there are some things that you can always object to, and no country is perfect. Europe has more homelessness, has more higher rates of poverty, right? Higher rates of crime, and the Middle East. So I see it as a good example of how non-secular countries are Mm-hmm. flourishing as well, and the transformation that the Middle East went through is more rapid. It took Europe centuries to go through that transformation. What took the Middle East only a few decades, right? सो So आप क्या कहते हैं कि अगर वेल्थ, अगर मिसाल के तौर पर एक आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन है. Okay, I you know, जी, जी जी वो ये है कि अगर यार पहली बात है कि जो 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 वेल्थ है ना वो किसी भी फिलोसफी की राइट या रॉन्ग होने का एविडेंस नहीं है. ओके, so for instance Russia was very powerful, it was more powerful than America, but that doesn't mean that their philosophy was right. Okay, now if China is gaining power, that doesn't mean कि China की philosophy ठीक है. Okay, चाइना बहुत वेल्थी है. tomorrow हाँ जी. tomorrow if some other country like Lala Land will become more powerful, तो इसका ये मतलब नहीं कि लाला लैंड की जितनी भी फिलॉसफी है वो राइट है. ओके, एग्जैक्टली ये it बात has got to do with a lot of other indicators about the position of that region. Okay, उस region का क्या environment है और कैसे है. So you know, this is not the criteria. Okay, acha, I think we are missing the link. Do you both agree that secularism penetrate करने की ऑफ कोशिश की कोर्स. जा रही है through media? no doubt,
Yeah, No, so there's can't. no doubt about it. Okay, There's no doubt. so please, how are they trying to influence the mind of the young Muslims in Mhm. Pakistan? So let's Mass keep media. secularism in Pakistan, Mhm. okay, alternative to one another, Mhm. like simultaneous to one another. Mhm. So Hamas, what do you think? ये क्यों हो रहा है इस तरह? ये क्यों हो रहा है या किस तरह हो रहा है? क्योंकि क्यों हो रहा किस है तो तरह हो हमने, रहा है? किस तरह हो रहा हाँ, है? हाँ, क्योंकि क्यों हो रहा है तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। किस तरह में ये इसमें आती है कि मिसाल के तौर पर आपकी जो सबसे प्राइमरी चीज़ ये है कि आपका बताया जाता है कि जो इसमें गाप दिया जाता है, ठीक है ना? आपको फ्रंट फॉरवर्ड कभी भी सेक्युलरिज्म जो है ना आपके सामने नहीं प्रेजेंट होगी। आपको आपकी जो प्राइमरी आइडियोलॉजीज़ जो हैं जिसको आप ऑलरेडी वैल्यू करते हैं उसको इन्फ्यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर नेशनलिज्म, ठीक है? नेशनलिज्म वन ऑफ इज प्राइमरी आइडियोलॉजीज जो कि सामने की फोर फ्रंट रखी जाती है, और उसके अंडर जो है वो बताया जाता है कि जो कि प्राइमरी आपका जो मतलब यानी डिवोशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी जो है वो इसके इसमें आनी चाहिए, ठीक है ना? रादर देन रिलीजन। रिलीजन जो है वो उसको हमेशा एज अ सेकेंडरी रखा जाता है कि इसको हम कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसको हम साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? मतलब यानी इसे छोड़ा भी जा सकता है लेकिन इसको हम साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है? और ये एक आइडिया आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है? अब इसमें हमारी स्कूल टेक्स्ट बुक्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है? इसमें Okay, so हमारा ये इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ दैट देयर इज अ वेरी फेमस स्कूल, उसकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था कि इट इज स्टिल अ मिस्ट्री एज टू हु वाज द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ. ओके, सो एक बहुत पॉपुलर स्कूल है इन डिफेंस. वी आर नॉट गोना नेम एनी नेम्स, Say the Let's name. take name. Okay. अवॉइड Okay. नेम्स। Avoid No, but it was in naming. the textbook. Okay, It's fine. so Let it be. okay, No. अब ये Okay. वाला जो बच्चा है, ये वाला जो बच्चा है, ये वाला जो बच्चा है जिसका पेरेंटिंग का लेवल जीरो है, जिसके पेरेंट्स ने उसको नहीं बताया हुआ कि हु वाज द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ, सपोज, तो वो जब बड़ा होगा तो उसके दिमाग में ये ट्रिगर चलता रहेगा दैट इट इज स्टिल अ मिस्ट्री एज टू हु वाज द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ. ओके, यानी कि दिस इज द बेसिक टेनेंट ऑफ, अरे ना subliminal messages होते हैं जो स्कूल. सेकेंडली, आई वर्कड विद अ प्रोफेसर फ्रॉम लम्स, हिज नेम इज डॉक्टर आरिफ राना. ओके, एंड ही अ डेमो. तो उन्होंने कहा कि देखो, पाक स्टडीज की जितनी भी बुक्स है ना सारी, उसमें आपको बताते हैं कि आपकी क्लासिफिकेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द एज, आपकी क्लासिफिकेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द जेंडर, आपकी क्लासिफिकेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रीजन, आपकी क्लासिफिकेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविंस यू लिव. लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा हुआ कि आपकी क्लासिफिकेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन. यू नो, so this is what they're trying to teach, that we can be similar to one another through these things. We can be similar through the age, we can be similar through our gender, we can be similar through through the province we live. ठीक है, लेकिन हम सिमिलर नहीं हो सकते एज पर द रिलीजन. फिर एक सबलिमिनल मैसेजेस देते हैं. जितने भी लीड स्कूल्स हैं, दे मेक यू वॉच सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्रीज बाय स्टीवन हॉकिंस एंड अदर पीपल, और उसके बाद कहते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन लिखें. और ये मैं बता रहा हूँ ग्रेड 6 के बच्चों को. और जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं तो जब प्रोफेसर आते हैं, बिकॉज ये वाले बच्चे दे डोंट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन, then we have very these sort of professors who try to give subliminal messages in their physics class or in their maths class. देखें ये बहुत बड़ा जो इसकी एस्पेक्ट, वजह से over the passage of time, more and फरीद more भाई आप जरा, आपकी regarding आवाज़ जरा कट रही है। what Your internet. I think there's some issue with your internet. rule.
Secondly, part of Islamic, that I mean, but certain time. Give. Can you hear me now? Yes. Yeah, we can. Yeah. Let me change my position. Okay, let me change my position. Yeah. So रोटर के पास बैठो. okay, so I think Yeah, sit okay. next to the right. So we need to give credit to the new government, जिन्होंने who have said that they are going to be extra Quran classes. So I think the government is working very hard in making a nice curriculum to get eliminate with all the problems that we used to have. Right. That's very good. Yeah. I want to add an additional factor to that if you don't mind. इब्राहिम भाई आप उसके बाद ऐड कर लेना. ठीक है. No worries. तो चक्कर ये है कि ये जो स्कूल बुक टेक्स्ट बुक में आपने बहुत ज़बरदस्त मिसालें दी हैं. ठीक है ना. सेकंड चीज़ आती है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके अपने आइडिया वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो ट्रांसलेट होते हैं क्लासरूम सेटिंग में. ठीक है. जिस किस्म के True. जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वही ट्रेनिंग जो है वो बच्चों पे इम्पार्ट होती है. ठीक है. और ये बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है कि टीचर के अपने आइडियाज़ के हैं जो कि हायर होते हैं स्कूलों में. ठीक है. तो रिगार्डलेस आप जौन सी मर्जी टेक्स्ट बुक उन्हें दें. ठीक है ना. वो अपना बीच में आइडिया बीच में ज़रूर इंस्टिल करते हैं. ठीक है. नंबर एस्पेक्ट एक ये बहुत बड़ा है. सेकंड एस्पेक्ट ये है कि मीडिया की जो गेम इसमें चलती है बहुत स्ट्रॉन्ग. ठीक है. अब वो दिखाया Actually, जाता है अगर आप देखें कि ना साइंस के जो for एनिमी है ना. मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत यूजुअल एग्जांपल देता हूँ कि जब भी रुयत हलाल कमेटी वाला चक्कर आता है. ठीक है ना. वो बताया जाता है कि अच्छा यार ये साइंस क्योंकि लोग तो इशू को नहीं समझते. ठीक है ना. कि क्या है. वो कहते हैं कि यार ये देखो साइंस ये कह रही है और हमारा दीन ये कह रहा है और ये जो मौलवी हैं ये हर वक्त मतलब यानी इनको साइंस नहीं आती और ये हर वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट उठाते हैं और ये लड़ाइयाँ होती हैं. ये बात सही है कि वाकई में दीन की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं और मतलब वो चीज़ बहुत रीइंफोर्स होती है. ठीक है. मीडिया उसका बहुत मज़ा लेती है. ठीक है. लेकिन उसका उसका एंड रिज़ल्ट क्या है. ठीक है. बच्चे क्या बच्चों के पास इतनी अभी नॉलेज नहीं है ना कैपेसिटी नहीं है. हमारे तो पहली एजुकेशन का मसला है. ठीक है ना. और वो क्या डिसर्न कर सकेंगे कि ये एक्चुअली फैक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट है और पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है. वो नहीं डिटर्मिन कर सकते. ठीक है. अब ये एक बहुत बड़ा है कि मतलब यानी जो एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद साइंस है. ठीक है ना. ये बहुत बड़ा वेपन है जो कि यूज़ होता है और ज़ाहिर बात है ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी है और साथ साथ ये मीडिया भी उस पर कैपिटलाइज करता है. तो आप कहते हैं ना जिससे कहते हैं कन्फर्मेशनल बायस. ठीक है ना. कि आपके पहले ही जेन में एक आइडिया बिठा दिया हुआ है और फिर कोई एक इवेंट इस तरह होता है आपके सामने तो फिर आपका बायस और शदीद बढ़ जाता है कि हाँ यार ये बात जो कह रहे थे कि दीन मसले पैदा करता है वो बिल्कुल ही दुरुस्त है. ठीक है ना. आई और ये थिंक आई थिंक और आई बढ़ती थिंक जाती है. हमास हमास अगर मैं आपकी बात को दोबारा एब्रिज करूँ ना तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि जो शैतान है वो ऐसे खेलता है. he makes you appear something as Islamic which is not Islamic. Okay. तो बेसिकली शैतान इस तरह का परसेप्शन हमारे दिमाग में डालता है कि ये चीज इस्लामिक है which is in fact not Islamic. Okay. जिस तरह वो ये कहते हैं कि science is un-Islamic, right? Or science goes against Islam, which is not true. Then let it be in terms of science or everything, and let it be in terms of innovation. यानी कि जो लोग innovation करते हैं religion में वो भी ये समझते हैं कि that is integral part of Islam, which is not actually true. So what happens is for some people, a devil is playing the role that this is a part of Islam, जो part of Islam नहीं होता. And for the other people, devil ये role play करता है that this is something Islamic, like the clash between science and Islam. It is there, जो in मैं fact बस नहीं यहाँ होता. मैं बस यहाँ पर एक हिस्टोरिकल पॉइंट बच्चों के सामने इंस्ट्रेट करना चाहता हूँ कि आप देखें जो यूरोपियन और क्रिश्चियन हिस्ट्री है ना उसके लोग उस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं हमारी हिस्ट्री के ऊपर. ठीक है ना. लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है. हुआ ये था हिस्ट्री में कि जब उनकी जो एज ऑफ इनलाइटमेंट थी उसमें ये था कि जो क्रिश्चियनिटी आई तो उनके यहाँ साइंस में डाउनफॉल आया. ठीक है. अगर हम ये Yeah, एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन हमारी हिस्ट्री ऑपोजिट हुआ है. ठीक है ना. हमारे yeah. यहाँ साइंस या ये वो चीज़ नहीं थी लेकिन इस्लाम के एडवेंट के बाद फिर हम शूट किया हमारी साइंस ने पेपर. वो हमारा फर्स्ट बुक ऑथरिंग जो है वो मतलब अरेबिया में वो सबसे And पहली even बुक कौन सी थी. वो the कुरान थी. the ठीक है first ना. the first first scientist was Ibn Haytham, who was a Muslim.
और Yes. उनकी quotations भी मिलती हैं that it is because of Islam I have started doing this research methodology. और Yes. ये और सिर्फ कोई मदरसे का बच्चा नहीं कहता कि इब्न हसन थे. It's a well known fact. You can go to Google and you can search about it. Western academics भी इस चीज को मानते हैं that they were philosophers before that, लेकिन he was the first scientist. So this is something really very important for us to know. Okay. एनीवेज इब्राहिम आप ऐड कर लें, सॉरी इब्राहिम आपको मैंने Yeah. कट ऑफ किया था तो उसके लिए That's right. अपॉलॉजीज, आप ऐड कर लें. No worries. No. I think the discussion is multifaceted. All right. So, पहली चीज़ है globalization. From a sociological perspective, globalization की वजह से क्योंकि बहुत सारा उनका cultural baggage जो है वो import होता होता जा रहा है, तो उसके साथ साथ उनकी कुछ values भी import होती जा रही हैं. ठीक है, और जब ये वैल्यूज इंपोर्ट होती हैं ऑब्वियसली इनकी इंकल्केशन होती है स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में, गवर्नमेंट सिलेबसेस में, यूनिवर्सिटी सिलेबसेस में, और फिर जब लोग वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और उन्होंने यहाँ इतनी गुर्बत देखी होती है और वहाँ जाके इतनी प्रोस्पेरिटी देखते हैं और फिर वापस आते हैं, they develop this idea that okay, that is the way of life, and then they try to promote that here. And so this is a result of many misconceptions. The first misconception, like you guys mentioned, is the misconception that there's a clash between science and religion. And so because of this idea, people tend to think, लोग सोचना शुरू समझना शुरू हो जाते हैं कि शायद religion backwards है. खैर ये चीज गलत है मुतलकन, यानी अरबी में कहते हैं मुतलकन, यानी मुतलक यानी क्लियरली गलत है, क्योंकि इन एब्सोल्यूट टर्म्स. साइंस की जो मेथोडोलॉजी है from a philosophical perspective, if you understand the philosophy of science, आपको ये पता चलेगा कि science is not absolute and science cannot always give you absolute truth. On the other hand, Islam is absolute and Islam gives you absolute truths. So if there is ever a clash between Islam and science, it's not because of one being forward and the other, or Islam being backwards and science being forward. It's probably the other way around. All right. And secondly, it is due to this globalization and this internal frustration that is there in third world countries, that they're trying to, people are so frustrated, they're cursing the government and they're trying to find a way. And so these people, they latch on to secularism and they try to promote it through the mass media and through anything else. In sociology, we would learn that mass media, it is a means of mass instruction. Okay, so you have mass destruction, weapons of mass destruction, and media is a weapon of mass instruction. So it gives you all these secular-based instructions that you get, and then people tend to get impressed by them, and so they try to promote these values. There was a comment here. Someone said that religion doesn't necessarily focus on worldly gains or development. So religion, Islam does focus on worldly development as well. It does focus on how can a country become prosperous. That's why Islam has its own economy. That's why Islam has its own political system. कि दुनिया आप किस तरह से अपने लिए बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम में people misunderstand this. Religion is not just okay, mera personal relationship between me and God. No, religion is at an individual level, it's at a family level, it's at a societal level, and it's at a country level. हर लेवल पे इस्लाम की गाइडलाइंस है. आपका अपना रिलेशनशिप भी गॉड के साथ, आपका अपनी फैमिली के साथ तामुल, ठीक है, उसके बाद सोसाइटी एंड रिलीजन, and then country and religion, and then world and religion. So religion and Islam, I won't say religion because there are many religions, right? But Islam focuses on how you can improve the world and how countries can become more prosperous and how societies can become more affluent and prosperous. And that's why Islam has its own political system, it has its own economic system. You have Islamic banking, you have Islamic economics, and Islam has its own philosophy on how a society should be run. And so this needs to be understood, and when you understand that, you can never promote secularism. And Allah subhanahu wa ta'ala. Alright. Okay, I think it was the secular influence in Pakistan. I think let's talk more about it.
We Yes, covered the books, we covered the professors, we covered the media. Hamas, do you have any other points to discuss? yes. The thing is that there are certain more aspects, right? We discussed the media, we discussed the schools and schools syllabus. There are two additional factors, right? One is the political factors. ठीक है, मतलब our जो हमारे जो CSS के ग्रेजुएट्स हैं उनका जो पूरा सिलेबस है जो कि हमारे ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है ना, उनका इफेक्ट इसमें क्या है। सेकेंडली हमारे जो इलीट्स हैं उनका इसमें क्या इफेक्ट आता है। और थर्डली जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटेलेक्चुअल पावर हाउस होती हैं किसी भी नेशन की, ठीक है, और उनका इसमें क्या है। इन तीनों एस्पेक्ट्स के अंदर जो है ये प्राइमरी बॉडी कौन सी प्रिवेल कर रही है और कौन सा आइडियोलॉजी जो है वो प्रोफेस कर रही है। स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट्स ऑफ हिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस एंड and sociologies and social different social humanities in general, right? हम ह्यूमैनिटीज़ को इग्नोर करते हैं, हम साइंस को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं कि इंजीनियर बहुत ज़बरदस्त है, डॉक्टर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हम ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि हमारी जो पूरी बेस बनती है, मतलब यानी नेशन की आइडियोलॉजिकल बेस, वो कौन लोग बनाते हैं, वो इन ह्यूमैनिटीज़ के ग्रेजुएट्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो बंदे हैं जो कि यहाँ से Hamas, I have okay, I agree with you. लेकिन मैंने उसमें ये देखा है कि उसकी रीजन ये है that we don't have good Islamic content and we don't have books up to that level which the contemporary studies have. Okay, for instance, when I was doing ACCA, तो ACCA में anyone who is familiar about accountancy, उसमें different IFRS होते हैं, IFRS 1, IFRS 2, 3. Then there are international accounting standards. So standard 1, 2, 38, 36. Okay, now each standard tells about a certain thing. On the contrary, जब मैं market में गया and I wanted to learn about Islamic banking, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला. I mean, on one side, I had such huge volumes, which were very well drafted books with a very fine printing and everything. But on the other hand, I was unable to find a single book which was very simple to read, which was classified in a unique way, and whose printing was like a Cambridge book or any other book. So I It think has this is a very big problem. मेरे start though. I mean, हाँ फरीद Islam. भाई, अब मेरी बात सुने कि यहाँ पर ये कौन बनाते हैं, ठीक है ना, ये बुक्स कौन नहीं, करते हैं, प्रेफर कौन करता है। इब्राहिम एक्चुअली later on I discovered कि इस्लामिक स्टैंडर्ड्स की सिर्फ दो ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं. One of them is in Qatar, I believe. But you know, it's not easily accessible. So I लेकिन can't ये go to Liberty Bookshop. में बात ये देखें है कि इस्लामिक बैंक में इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो है अल-इक़्तिसाद अल-इस्लामी, इसमें ज़्यादातर रिसर्चेस इस वक्त अरबिक में हो रही हैं क्योंकि फ़िक़्ह ये Yeah. टॉपिक है So रिलेटेड टू फ़िक़्ह, राइट। तो फ़िक़्ह में हम पढ़ते हैं फ़िक़्हुल बुयूअ में इक़्तिसाद अल-इस्लामी एंड इस सारे सिस्टम्स को, और काफ़ी सारी किताबें इंग्लिश में भी लिखी जा रही हैं और लिखी जा चुकी हैं जो कि पढ़ाई जा रही हैं कुछ इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में, मेरे ख्याल से इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी और मेरे ख्याल से शायद नॉलेज इंटरनेशनल no. यूनिवर्सिटी। Ibrahim. What मैं I'm यहाँ trying to से say is what I'm trying to say is कि इन books की accessibility बहुत कम है. You need to know some basic understanding of Deen to find these books. On the other yes. hand, जब दूसरी books आती हैं उनकी accessibility बहुत ज़्यादा है. There is a reason why several NGOs in Pakistan are printing their material and distributing for free. ठीक है, वो उर्दू में भी print करते हैं, वो English में भी करते हैं, and you know they are distributing for free. But on the other hand, we Muslim organizations or the people of Pakistan, uh, we have failed in the distribution in making things accessible. यानी कि imagine that you know you are not Ibrahim Faruqi and Hamas is not Hamas and I'm not Fareed, right? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई जो जिसमें मुझे किसी से इस्लामिक मशवरा लेना है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि सिर्फ मैं अपने मस्जिद के इमाम से मशवरा ले लूं. I don't know a single Islamic scholar in Pakistan, you know, for a normal lay person. जिसकी वजह से a lot of people do get the right guidance and a lot of people don't get the right guidance. I agree with Exactly.
तो I agree. मैं इसी में ही ऐड करना चाह रहा था कि हमारे पाकिस्तान की मतलब यानी ये जो हमारी जो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है बिटवीन ये इंटेलेक्चुअल डिस्पैरिटी और मटेरियलिस्टिक डिस्पैरिटी, ये इसी वजह से है क्योंकि इवन हमारी जो ह्यूमैनिटीज़ है ये इसी का तो काम है कि ये सिस्टम और बुक्स और ये जो मटेरियल है जनरेट करना, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक्स में हो चाहे सोशलिज्म में हो, और किस तरह ये जो माइंड पावर है वो इस पे फोकस लगे। लेकिन मसला ये है कि जब तक वो बच्चे यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं आधी तो आइडियोलॉजी ऑलरेडी वो सेक्युलरली इन्फ्यूज़ हुई होती है, ठीक है। या उन्होंने कितनी उस पर मतलब यानी इंटेलेक्चुअल एफर्ट लगानी है, ठीक है। हम पहले ही एज अ नेशन हम इंटेलेक्चुअल एफर्ट लगाने से भागते हैं, ठीक है ना। तो अगर लगाएं भी तो ये यूनिवर्सिटीज़ का ही काम है ये चीज़ें जनरेट करना, ये बुक्स प्रिंट करना, ये वो सारी चीज़ जनरेट करना और इतनी इफेक्टिव लेवल की जनरेट करना कि हम compete कर सकें, ठीक है, उस लेवल पर। तो I would I'm sorry I'm cutting you off, but what I would like to say here is something very brief, and I do apologize for cutting you off. Is that अब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ओ ए लेवल्स के उसमें, यानी पढ़ाई जाती है साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। मैंने इकोनॉमिक्स अपना सर बड़ा खपाया है, सोशियोलॉजी पे भी सर खपाया है, लेकिन कभी फिक़्हुल बुयूर पढ़ाई जाती है जो कि आसानी से पढ़ाई जा नहीं, सकती है। फिक़्ह नहीं पढ़ानी, पढ़ाई जाती। इट शुड बी अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। और जब तक गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट्स नहीं होंगी, सिलेबस में ये चीजें नहीं डाली जाएंगी, तो लोग जो अभी मैनुअल्स छप रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग पे, लोग उन्हें नहीं समझ सकते। इसी तरह अगर कोई कहे, कोई अब ज्यादातर बुक्स हैं सोशियोलॉजी पे, मोस्ट ऑफ देम आर एडवांस्ड वर्क्स। अगर आपने ओ और ए लेवल सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी हुई तो आप उन वर्क्स को शायद ना अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। लेकिन लोगों ने अपना सर खपाया है ओ और ए लेवल सोशियोलॉजी पे, ठीक है, और फिर वो उन वर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो हर स्कूल में पढ़ाने जाने चाहिए, ताकि लोग जो इस्लामिक बैकग्राउंड है इन सारी चीज़ों का, इस्लामिक अकाउंटिंग, इस्लामिक इकोनॉमिक, इस्लामिक बैंकिंग और इन सारी चीज़ों को समझ सकें। I'm really sorry for cutting you off. Please continue. ट्रू, नहीं, you're you're ट्रू। you're right, that's what trying to say additionally। जो अब ये होगी हमारी बात जो कि इंटेलेक्चुअल पावर हाउसेस का जो कि गैप जनरेट करती हैं, और पॉलिटिकल पावर हाउसेस की बात करें, ठीक है। एक तो होगी हमारे जनरल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। जनरल पॉलिटिक्स अपने इलेक्शन से जो बंदे आए हैं वो ठीक है, ठीक है, उसमें कोई इस्लामी होगा कोई नहीं होगा, और लाजमी उन्हें कईयों को होना भी पड़ेगा अगर वो नहीं है, ठीक है ना। वो लाजमी होना पड़ेगा अगर उन्हें रन करनी है। आप पीपीपी, आई एम सॉरी मैंने पार्टी का नाम ले लिया, लेकिन वैसे मैं कह रहा था कि कुछ पार्टीज़ हैं यहाँ पर जिनको मतलब यानी डिस्पाइट उनकी ट्रेनिंग जो है वो हाईली सेक्युलर इन्वायरमेंट में, सेक्युलर पॉलिटिक्स में है, लेकिन उसके बावजूद उनको रिलीजन को हाईली इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो हम कवर कर सकते हैं इस पॉलिटिक्स में, और हम चलो आर्मी के भी बलबूते हम कहते हैं कि ये सादा बंदे हमारे से ही आए हैं और इन्होंने किया। जो थर्ड लेवल है जो कि एक्चुअल रन करती है हमारी कंट्री को, वो चीज़ आती है ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है ना। और उसके जो सब्जेक्ट्स में उनको गो थ्रू करना पड़ता है, और जो उनकी एक एलीट क्लब्स हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर सिर्फ कुछ टाइप ऑफ थिंकिंग के लोग जो हैं वो एंटर हो सकते हैं और दूसरी टाइप के ऑफ थिंकिंग के एंटर नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं कि एलिमेंट है हमारे अंदर ब्यूरोक्रेसी का, जो कि हमारी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। इस बारे में फरीद भाई आप का क्या राय है? यार एक क्या बहुत समझ। सिंपल सी एडवाइस है, एक सिंपल सी एडवाइस है। इब्राहिम, करेक्ट मी if I say something wrong. Okay, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शायद सूरत अल-नूर में कहा हुआ है that the when people are going to believe in Allah and they're going to do righteous deed, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अथॉरिटी दे देगा on this earth. Okay, तो basically the simple answer is that we need to increase in our dawah. That's something that we can do. जैसे ही हम देखेंगे कि मुस्लिम सोसाइटी में वाकई इस्लाम आ जाएगा और वाकई सब कुछ हो जाएगा, everything is going to end. The bureaucracy, the government, everything is going to change. So what we forget is that हमें ये होता है कि गवर्नमेंट पूरी चेंज हो जाए लेकिन हम चेंज ना हो. Okay, so that's the dilemma of our society. कि मैं करप्शन कर लूं लेकिन गवर्नमेंट करप्शन ना करे. आई शुड लाई, मैं झूठ बोल बोल के अपनी चीजें बेचूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गवर्नमेंट झूठ ना बोले.
So I think Mhm. on a ground reality, the practical advice is that increase your amal, और उसके साथ साथ propagate the religion of Islam. Tell people what is right Islam, and inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala is going to fix everything. Inshallah, I mean, that's a inshallah. that's a very simple, non-complicated answer, and this is Yeah, the truth. but This is the truth. it is indeed the truth. But the solution is a bit complicated. So the thing is, the point of No, discussion. I don't think so that it's a complicated solution. No, what No, no. I think, It I mean like the I think, pragmatics. Don't yeah. you believe that, for example, if it comes to working on actual books on banking and whatnot, right? Wouldn't you say that it's a No, complicated task? it's not complicated. You know No, no, why? no. The thing is, people need to stop criticizing the government because that's not the solution to anything, and No, stop we're Yeah. not. wait. We're not No, criticizing no, just no, as no, of no, no, yet. no. We're just saying, I'm not talking about you guys. I'm saying in general, awam ka yeah, jo attitude hai, right? I think that people who Allah subhanahu wa ta'ala has given wealth should get together, and such organizations should be made and should be funded where experts and scholars of Islamic economics, scholars of these different systems, they sit down and they work on something like this, because the reality is this stuff requires funding. You can't expect a scholar to कि अपना सारा वक्त वो छोड़ के अपनी जॉब छोड़ के वो बैठ जाएं. अब उनकी भी family है, right? He has stuff to do as well, and this is the good thing in UAE, alhamdulillah, that people get together, even the youth, they get together, they start a center, they fund it, and they call ulama to give lectures and to do this, and that, and to do work, like Ustad Abdurrahman Hassan is doing for Kalima, and so on and so forth. Right? So initiatives like this need to start here in Pakistan, where inshallah, let's hopefully with Youth Matters we can do something, بإذن ta'ala, inshallah, inshallah inshallah. ta'ala. So Inshallah. But yes, like this platform is one of these No, places where we can make a start. Ibrahim, what I personally think is that it's not only one domain we need to work. There are no, several domains. So, many domains, no so doubt about we need to have Islamic books, good literature. We need to work in the field of media. Then we it. No need to doubt. work in the field of um, uh, community service and all other Yeah, things. So, good work has started. I mean, for example, in media, Peace TV, Huda TV, other TVs, other like they've started, alhamdulillah. And even there are a lot of ulama who have dedicated themselves to writing. A lot of people teaching stuff. but A lot of Ibrahim, I mean, Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala reward them. But people expect, an Islamic movie of a standard of a Hollywood, where you have we where you have, can't have okay, Islamic. so To be honest. okay, so it should be a Sharia compliant movie. There's no harm in making a Sharia compliant movie, which basically penetrates different dialogues and ideas into the mind of people. It's very essential because we are living in 21st century. Okay, Uh, I think what's important. I'll quote Sheikh Muhammad Nasruddin Al Albani, the muhaddith of this yeah, age. He said, and he mentioned the ulama, a lot of ulama, they agree with him. He says the solution is at-tasfiyah wa tarbiyah, to educate and to purify. All right. yeah. And well, inshallah ta'ala, we hope to do and we continue to do, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to do that. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us ikhlas Ameen, in ameen. it. Amen, amen. All right, so for the last word यानी आखिरी अल्फाज उसके लिए मैं फरीद अहमद की तरफ कर दूंगा. तो आप बताएं कि I think this session Um, is about around 1 hour this Yeah. time. yeah, So it's 1 hour. I personally think that as citizens of Pakistan, we have a lot of obligations as well. Okay, and we don't know in our life whether the change is going to come or not. But we should be someone who were the agents of change. And after our death, people should appreciate us and our working and our contribution. And inshallah, the most important is that it is we do with an intention of pleasing Allah Subhanahu wa Taala. That No after doubt. we die, our legacy should go on in terms of Sadqa Jariyah. So let it be Pakistan, let it be Islam, let it be the community service you're doing. Whatever you're doing, you should at least do something. Okay, don't do nothing. काफी ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो बस ऑफिस जाते हैं, उसके बाद ऑफिस से वापस आते हैं,
उनकी फैमिलीज होती हैं और उसके बाद मर जाते हैं. ओके, सो इन द एंड दे हैवंट रिटन अ सिंगल बुक, कभी कोई लेक्चर नहीं किया, कभी इल्म नहीं हासिल किया, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं किया, कोई कम्युनिटी सर्विस नहीं की. तो आप उन बहुत कम लोगों में हो जो who are actually giving back to humanity, because when we are saving someone from hellfire, we are actually giving something to humanity. Okay, so this is also very important, that I don't want my brother to go in hellfire. I mean, any Muslim brother to go in hellfire. So और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा ही आलिम बन जाए. ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा ही मुजाहिद बन जाए. सो जो जिसका स्किल सेट है उसको उसी के अकॉर्डिंगली उसी पे काम करना चाहिए, और किसी ना किसी तरीके से गिव बैक करना चाहिए टू टू द कम्युनिटी. दिस इज द लास्ट वर्ड. तो आप अपना स्किल सेट देखें. इफ यू आर अ गुड टीचर, इफ यू आर अ गुड राइटर, you should write something to educate others. If you're a good debater, you should debate for Islam. If you are a good person, do whatever your strength is. That's a piece of advice from me. And also don't forget that it starts with an individual level and with your family. Allah subhanahu wa ta'ala says, first of all, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Don't just think about the society. The society is built through the family. Right? Yeah, So true. the best thing you can do right now, sitting at home, forget everything else. The best thing you can do is seek knowledge, try to fix yourself, and try to fix those around you, and follow those Islamic teachings. And inshallah ta'ala, one family gets fixed, two gets fixed, three gets fixed. This way the society will get fixed as well, inshallah ta'ala. Inshallah, inshallah. Inshallah. Hamas, I would like you to conclude this session with All your right, so remarks. All right, so I believe that today's discussion was very fruitful. We stuck to our agenda, and we discussed regarding secularism, its definition, its aspects of how it got incorporated into our society, in our language and culture, and in our politics. And furthermore, we discussed regarding solutions and the gaps that we need to overcome this problem of secularism. So, inshallah, this was, I believe, a very good session on this topic of secularism. And Jazakallah for Brother Fareed Ahmad for the input, and for Brother Ibrahim for all his input. And this is Youth Matters. And inshallah, we will continue more such topics for you. And inshallah, we will cover. And please give us your suggestions. What can we cover next? And inshallah, we will cover all these topics which you suggest. Jazakallah khair. This was a. Inshallah, we will move to next. This was Youth Matters. Jazakallah khair. Jazakumullah All right. khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum assalam.